इसमें जाने का तो साफ होंगे। Let's pray also. अभी मैं क्या देख रहे हैं? How are you benefiting out of it? Tempers cool down rather than flaring up things. We have actually launched the Australian Education Path. This is the first time in India that the student is enrolled in Pakistan and start his education in Pakistan and then What is the percentage of people who exactly are sitting? A lot of these things are propagated and everything. At the end of the day, so that's about it. spend it all and get that opportunity. And you get off because you say we were only facilitators, we never get a visa or a job. Yes, but the The general impression I'm getting. And The biggest attraction is the Fulbright scholarship. Because often it's the master's ceremony. That's basically, what we are looking for.
This is not students who are not qualified for the Fulbright yet have a good GRE score. If they can touch base with the advisor. Educational excellence, I really want to emulate that. Thank you so much. I'm going to take this as a surrender. In fact, I think Aarti career se Pearson test new test अच्छा नहीं मैं क्या निकलना है आगे एक से बाद So he helps me out, so you see, you can get advice from anywhere in the world through this internet and through he helps. मैं तो खुद जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन का मिनिस्टर था तो मैंने खुद उसका एक किया था एक छोटा सा वो देते थे the remotest part, you know, send that test blah get unless of course it was serious, so he had to be shifted to the hospital. Otherwise even at the rural dispensary they could, you know, उसका इलाज. This is obviously needed, but we are far behind. Millennium Development Goal जो हमारा पीवी ने भी साइन किया था, that was relatable to this technology, and through this technology we were supposed to abridge the poverty of the world and decrease it to 50%. But when I attended Geneva and New York, what we found was that 2015 is approaching, but we are nowhere near it at all. So I think it has to be more proactively done. And offering the services of abroad studies to studying in UK for ACC in our colleges. And now we have started for Canada. And Yeah. kind of opportunity. They spend a lot, but at the end of the day, they are not facilitated, or that doesn't come through. And then they keep on scrambling that, well, we were cheated somehow. Actually, no, I don't believe this. Actually, most of the Scanians going abroad, they are like belongs to good families. They are previously good educated. So most of the students, I think 100% students going from Scan, they are enthusiastic for the higher studies. And then mostly because we are offering chartered accountants, this is 15 Chartered years. accountancy is something This is something needed quite with. different. Yeah, it is under the umbrella of chartered accountants. Make it bad in the other It's important to accept. It's the top ranking university of Canada. There are lots of Pakistanis in Ontario. In fact, our students, our Pakistani students do very well. They're gold medalists from Waterloo. Waterloo is a very big name, I think. Thank you so much. I came here actually on the invitation, and I saw the stalls for myself, and it's really impressive. As you are aware that this is an era of knowledge which is based on education. Education falls back on institutional excellence, and I think we, as you know, that Pakistan today has a youth force. 2/3 of the population is under the age of 30 years. Half the population of Pakistan is under the age of 25 years. MashaAllah, we are now, according to the latest census, we are almost nearing 200 million people. And with this ratio, you can imagine that the youth force in Pakistan is one of the highest ratio in the world. So we have demographic dividend, human resource, vibrant, youthful, energetic, passionate, and very, very patriotic. So I'm sure that if we are able to take them into this educational excellence, because gone is the era of expansionism, today is the era, as I said, of knowledge. So you can conquer everything, you can conquer over poverty, you can conquer over miseries, you can conquer over the militancy. It is through education, through knowledge, and not through wars and strifes and hatred, because hatred begets hatred, love alone begets love. So it is education which teaches the best and brings the best in human beings. And therefore I think education, we must concentrate on it.
And in the next 10 years, Pakistan is going to reach a staggering figure of 300 million in population, and we would be needing 36 million jobs in the next 10 years. So I've been asking the educationists, the faculties, the universities, that the educational system curricula has to change. The disciplines have now to be transformed more towards inculcating an entrepreneurial skill, entrepreneurial basis, because the youth who no country in the world can provide all their educated people with jobs, government jobs. So therefore what we have to do is we have to transform our educational system to give them entrepreneurial skills. The education has to be market-based, it has to be skill-oriented. So therefore, the more we realize this, we have to be futuristic in our plans and in our projects, and therefore we have to promote this and inculcate this demographic dividend of such a vibrant youth force and a human resource that we have. This could also turn into a demographic disaster if we do not look to the future and do not cater for the needs of the youth. I therefore have called upon the faculty and the universities to associate these young people, these education students. Gone is the era when there was a gap between the parent and the child, and they used to just snub him and not let him be closer and answer his questions. Likewise, the faculty members should also embrace that distance between the teacher and the taught, because today's student is a student of internet. He has the Google, he has the search engine, he is abreast with everything which is happening in the world. So his inquisitorial nature, it has to be satisfied, and therefore we have to satiate his thirst for knowledge. And the sooner we understand and associate our students and our youth, and associate them not only by answering their questions and satisfying them, and so also shredding off those doubts that are lurking in his mind, but also we should now involve them in policy making also, so that we give them ownership. If we give the youth ownership over the decisions that are taken either at the parental level or in the faculties and universities, then they will feel it is their own decision, and they will put in everything to make it successful. And that is, I think, which will take Pakistan amongst the comity of nations with dignity and pride. And that is where I have always stressed that let us all work in unison to promote the educational excellence, which alone will take Pakistan and give Pakistan that pride, and it will also ameliorate the miseries not only of the people but also give the economic stimulant and economic boost that is required for Pakistan today. आपने इज्जत और वकार की बात की है। आज अमेरिका की तरफ से इसी बात की पाकिस्तान को खतरा है कि पाकिस्तान इतनी कुर्बानियां भी दे चुका है और अमेरिका ना इज्जत करने के लिए तैयार ना में वकार देने के लिए तैयार है। देखें, ये जो माइक म्यूलन ने कहा है, आपने उस पर हमारे वजीर आज़म का और हमारी वफाकी हुकूमत का और वहाँ जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है और हमारी फ़ौज पाकिस्तान जो उन्होंने उसका जवाब दिया है आपके सामने है। हमारी जो है जमहूरी क़यादत और हमारी अस्करी जो क़यादत हैं, उन्होंने एक ही स्टांस लिया है और उन्होंने बड़े फर्मली ये कहा है कि हम कोई ऐसी जो है इस किस्म की इश्तिहाल अंगेजियों से एतराज़ किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये हालात उस डगर पर पहुँचें, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के बिना वो अफगानिस्तान में या जो उनका जो वॉर ऑन टेरर जो वो उन्होंने एक दुनिया पर मुसल्लत कर रखी है, पाकिस्तान के बिना वो कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते। और उनको ये एहसास दिलाया गया है कि आप देख लीजिएगा कि फिर अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो अगर आपको भी फिर इसका जो है वो भुगतना पड़ेगा नताइज। हमें धमकियां देने की आदत नहीं है, ना धमकियां इस लेवल पर
मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ देना चाहिए, लेकिन तहजीब के, महज़ब के, डिप्लोमेटिक अंदाज में मेरे ख्याल में जिस फर्मली कौम की वकार को मलहूज रखते हुए जिस कुव्वत से मेरे ख्याल में आपकी वफाकी हुकूमत ने, आपकी अस्करी क़यादत ने, आपके बाकी कायदीन ने जिस अंदाज से मेरे ख्याल में बात की है, किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर, पाकिस्तान की इज्जत पर, पाकिस्तान के वकार पर किसी किस्म की जो है हम वो कौम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी के साथ रप्चर ऑफ रिलेशनशिप या कोई हम जवाना जो है हमारे अज़ाइम ना है, और ना ही ये दुनिया अब ईरा है एक्सपेंशनिज्म का, जंगों की वो बातें खत्म हो गई। अब तो हमें अमन से रहना होगा, और इसीलिए हमने कहा है कि देखें, अगर आप समझते हैं कि हक्कानी नेटवर्क की आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं तो आइए हमारे साथ शेयर करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और हमें बताएं, हम खुद कार्रवाई करने को तैयार है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। पाकिस्तान इस वक्त एटॉमिक पावर है, किसी को इस चीज का जो है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी दूर रस्त हमारी वो दस्तरस रखती है, इसका भी किसी को मेरे ख्याल में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान ना तो अफगानिस्तान है और ना इराक है। खुदारा ये गलतफहमी अपने दिमाग से अगर कोई समझता है तो निकाल दे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम नहीं चाहते कि दुनिया में जो है या हमारे खित्ते में इम्बैलेंस हो, अमन आमा की कोई खलल अंदाजी हो। पाकिस्तान के आवाम को हम खुशियां दे के तरक्कियां देना चाहते हैं। इस सारे सब कॉन्टिनेंट को हिंदुस्तान ने भी बड़ी जल्दी कह दिया कि हम तो पहले कहते थे। हिंदुस्तान को भी ये सोचना चाहिए कि उसके लिए भी इसी चीज की जो है इंटरेस्ट, उसका भी इंटरेस्ट इसी में है कि ये खित्ते में अमन हो, क्योंकि इस खित्ते में अगर जो है खुदा न खास्ता अमन में खलल हुआ तो हिंदुस्तान भी अपने आप को जो है इससे जो है मुबर्रा ना समझे, और उसके अवाम तो पहले ही जिस गुर्बत की दलदल में है। आप मुंबई में अगर बत्ती चली जाए तो आप यकीन कीजिएगा रात को आप इंसानों के ऊपर से गुजर रहे होंगे। इतनी अफलास है वहाँ, इतनी भूख है कि फुटपाथों पर और उनके पाकों में गरीब अवाम सोए हुए होते हैं। और इसलिए इस मैडनेस को भूल जाए कि हम जो है अब जंगजुआना अज़ाइम की हम अपने अवाम को जो है कोई तरक्की दे सकते हैं या हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो है तरक्की की राहों पर काम। इसलिए मैं समझता हूँ अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, या ये तमाम रीजन के ममलिकत है। हमें अपनी जो है सोचना चाहिए कि हम किस तरह से ज्यादा मजबूत और किस तरह से ज्यादा जो है फआल की पोजीशन में है कि अमेरिकी जारियत अगर होती है तो ड्रोन हमले तो रोके नहीं गए। वजीर आजम साहब ने एक सारे जो सियासी कायदीन, सारे जो अवामी कायदीन हैं, चाहे वो पार्लियामान के अंदर है चाहे वो पार्लियामान के बाहर है, सबसे उन्होंने राब्ता करके एक APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस प्रपोज की है। इसलिए हम ये तमाम जो बातें हैं हम चाहते हैं कि बाय कंसेंसस हो। और जिस तरह आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है, हमने तमाम फैसले जो हैं इत्तफाक राय से सारी कौम को साथ लेकर किए हैं। और इसीलिए हम मालाकंड ऑपरेशन जब किया तो अस्करी क़यादत ने सिविलियन डिक्टेटर के ताबे करके जब सारी कौम ने किया तो हमने वहाँ से किस अंदाज से, किस खुशनुबी से हमने उसको अबूर करके हमने 30 लाख हमारे जो इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन से हमने एक शॉर्ट टाइम में तो क्या हम उन्हें गिराएंगे। देखें ये जो है आपने बड़ा वाज़ेह सुना है कि अगर हमारी जो है सॉवरन टेरिटरी पर अब अफगानिस्तान की जानिब से कोई इस तरह की इश्तियाल अंगेजी अफगानी नेटवर्क के हवाले से या नदन जो है एरियाज में कोई ऐसा किया गया तो उसका उन्होंने कहा है कि हम भरपूर जो है भी बारहा कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का जो है इसमें फ्लेयर अप हो, फ्लैग्रेंट हो या कोई जो है ताल्लुकात और ज्यादा उस जगह पे जो है जाए जहाँ से वापसी का रास्ता ना हो। हम चाहते हैं कि ये मामला जो है खुश अमेरिका जो हमारे पार्लियामेंट की करारदादों को भी नजरअंदाज करता रहा है। आप समझते हैं कि हमारे APC कोई उसके लिए असरअंदाज होगी, उसको कोई अहमियत देगा? यकीनन जो है उसमें भी एक कंसेंसस बिल्ड होता है। आपने देखा कि हालांकि कोई ऐसे जो बहुत ज्यादा जो इश्तिहार की बातें करते थे उन्होंने
بھی آج واضح طور پر کہا ہے کہ ہم پاکستان کی وفاق، پاکستان کی افواج کے اس معاملے میں جہاں ناموس کا، جہاں مملکت کی ساورنٹی کا سوال ہوگا، ہم پوری طرح اس کے ساتھ ہیں. اور آپ نے دیکھا 65 کی جنگ میں جب بھی ہوا تھا تو عوام جب ساتھ تھی تو آپ کی افواج نے کس انداز سے جو ہے بھرپور کیا تھا. ہم صلاحیت رکھتے ہیں. آج پاکستان الحمدللہ اس کی جو یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں if you want to apply the minimum tenure to apply it will start somewhere in December the application. By the time you will get the response or result from them will be next year. So it's 6 months they take. After that because of the program یہ کہاں کا اسٹوڈنٹ ہے Lots of colleges and universities here, along with their programs and their intakes, IELTS requirements.